Good evening. Today is 21st December 2016. Now we discuss current affairs today. So for it is presented by me. My name is Kumar Daku. Okay, now we start our current affairs discussion. Okay, US-based researchers for the first time have observed that the creation of ice crystal on individual atmospheric particles in the laboratory. Okay, जो यूएस बेस का जो रिसर्चर है वो फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया है जो क्रिएशन ऑफ द आइस क्रिस्टल्स के जो क्रिएट होते हैं तो उसे इंडिविजुअल एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स में वो होते हैं ना, तो उसको लेबोरेटरी में दिखा गया है। यूएस बेस्ड जो रिसर्चर्स ने उन्होंने वो दिखा। ओके, द ऑब्जर्वेशन गिव्स एन unprecedented griefs at most critical, at least understood parts of the follow process and could cold clouds formation. So यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया है उन्होंने? अनप्रेडिक्टेड ग्रिफ्स ऑफ मोस्ट क्रिटिकल बट लिस्ट अंडरस्टूड पार्ट्स ऑफ द प्रोसेस। कैसे वो कोल्ड से क्लाउड फॉर्मेस्ट होते हैं, कोल्ड क्लाउड फॉर्म होते हैं, इसके बारे में उन्होंने रिसर्च किया है। देखिए रिसर्चर्स की फैक्ट्स क्या कि रिसर्चर हैड रिप्लाइड हेटेरोजेनियस आइस न्यूक्लिएशन प्रोसेस हैज in which particles attracted water vapor को particle attracted थे water vapor को and from the ice crystal and from forms करते गया ना ice crystal। for this they replied suitable condition, उन्होंने रिप्लाई करते हैं suitable condition को found high above earth atmosphere में देखते हैं, हाथ सरफेस के above में देखते हैं, altitude 6 किलोमीटर में above 6 किलोमीटर में हम देखते हैं वाटर जो suitable condition में वो होते हैं। ओके, वेयर जहाँ पर सिरस क्लाउड जो है वो फॉर्म होता है। ओके, तो दे विटनेस्ड फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल इन हाईली कन्फाइंड क्लाइमेट कंट्रोल चेम्बर। ओके, इन विच एटमोसफियर जो टेम्परेचर उस टेम्परेचर में वो क्लाइमेट कंट्रोल हो जो वो करते हैं, आइस क्रिस्टल बनाते हैं। ओके, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी कंडीशंस मेंटेन सिमिलर इन एटमोसफियर। प्रेशर और जो टेम्परेचर वो भी मेंटेन रहते हैं फॉर रिक्रिएशन ऑफ आइस न्यूक्लिएशन के लिए। ओके, रिसर्चर ऑल्सो यूज एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, वो यूज करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ क्ले मिनरल कॉल्ड, उसको हम कहते हैं स्मॉल पार्टिकल ऑफ क्ले मिनरल के यूज करते हैं, तो उसको हम केओलिनाइट कहते हैं। देखिए केओलिनाइट क्या है? केओलिनाइट है जो हम फॉर रिक्रिएशन ऑफ आइस न्यूक्लिएशन रिसर्चर क्या करें ना, जैसे यूज एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स को यूज किया है क्ले मिनरल्स में। सो इसको हमने क्या कहते हैं ना, केओलिनाइट। दिस पार्टिकल्स जस्ट 2 to 3 माइक्रोन्स इन साइज, जो क्या 2 to 3 माइक्रोन्स है उसका साइज है, और लेस देन 1/10 width। ओके, ऑफ द ह्यूमन हेयर। ओके, जो ह्यूमन हेयर के भी लेस देन 1/10, सो 10 में से एक भाग है जो है ह्यूमन हेयर। द केओलिनाइट वाज देन केओलिनाइट वाज देन प्लेस्ड इन अ हाईली कन्फाइंड क्लाइमेटिक कंट्रोल। कहाँ पर प्लेस्ड होते हैं ना, हाईली कन्फाइंड जो क्लाइमेट कंट्रोल करता है चेम्बर ऑन वेरी स्मॉल साइज, जहाँ पर which has photographed by an environmental scanning, जहाँ पर हम environmental photographed by an environmental scanning कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। ओके, जो फोटोग्राफ लिया हुआ है हमने environmental स्कैनिंग किया है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। इट वाज फाउंड इन दैट न्यूक्लिएशन, वहाँ पर क्या फाउंड किया है हमने? ओके, दैट एट टेम्परेचर जब लो एंड माइनस में -60 डिग्री में वो होते हैं। ओके, 68 में, तो सेल्सियस में वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है फ्रॉम द अबव 70 to 80%, फ्रॉम द 70 to 80% फॉर्म करते हैं। ओके, natural process of heterogeneous ice nucleation. So it is at altitude of 6 km, relative humidity is high and temperature is very low. It forces the water vapor and collect on any small particles floating in the atmosphere, even freezing in place as an ice deposit in the atmosphere. Such airborne particles could be almost anything, including volcanic ash, aircraft emission. Okay.
देखिए लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर कैपेबल seismic cruise missile निर्भय was testified from the launch complex 3 of the Interguard missile test range in Balasore, Odisha में. The test was conducted by the Defense Research and Development Organ DRDO after blasting off from launch pad. The missile took a unique trajectory in its entire path to the target. However, the test was an Uttar failure. The test was Uttar failure. It was fourth test Nirbhay missile so far, and out of four, three have ended in failure. The Madan, the maiden launch was conducted in March 2013, but it was failure. The second test was conducted in October 2014 was a big success as it had travelled 1010 km instead of the target 800 km. The third missile of October 16, 2015 was again failure. After about Nirbhay missile Nirbhay missile is a long range surface to surface nuclear capable seismic subsonic cruise missile. Okay, about Nirbhay missile about a long range surface near capable seismic cruise missile developed indigenously by the DRDO. Okay, DRDO का full form क्या है? Defense Research Development Organization. Okay, it has blended missile and aeronautical techniques which allows it to take off vertically like a missile and cruise horizontally like an aircraft. It is a two-stage missile. In its first stage, it tilts horizontally. In the second stage, it will cruise horizontally like an aircraft with a turbojet engine. Okay, वहाँ पर तो क्या है ना cruise is horizontally like the aircraft with a turbojet engine at a subsonic speed. Okay, 0.67 Mach. Okay, it is capable of carrying multiple payloads including nuclear warheads. Okay, it is capable to engage several targets. Okay, capable क्या करने engage क्या करते हैं ना engage several targets in a single flight में. It can be launched from कहाँ से okay various kind of platform launch from various kind of platform ranging from surface lorry to a ship. Okay, so इसका speed क्या है? The engine at a subsonic speed 0.7 Mach. Okay, so carrying multiple payloads including nuclear warheads. Okay, so engage several targets single flights. Okay, launched a various kind of platform ranging lorry to ship. Okay, for air and even from underwater vessels, it is straight hugging missile which keeps to on encircling the area of its target for several minutes. Okay, and then hits bull's eye, opportune time. It is difficult to detect by engines radars. It had strike range of 700 km से 1000 km होता है इसमें strike range. In India, the capability of to strike deep into enemy territory. Strike कर सकते हो enemy के territory में. It is considered as India's answer to US Tomahawk and Pakistan Bhabar missile. Okay, yes, Tomahawk and Pakistan Bhabar missile. Okay, it is expected to supplement the India-Russian joint venture BrahMos supersonic cruise missile, which can carry warheads up to 290 km. Okay, the Union Cabinet gave approval to the cadre review and formation of new service in the name of the Indian Enterprise Development Service (IEDS)
development service. So Indian cabinet क्या ने approval किया ने cadres review permission in new service Indian enterprise service development service जो decision regard to taken with Indian government meetings में वो decision लिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने न्यू दिल्ली में. की फैक्ट्स क्या है, IEDS जो है जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट जो सर्विस है तो ये क्रिएटेड इन द ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमीशन Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME). Its creation will help to strengthen the organization and to achieve the vision of Startup India, Make in India. It will also enhance the capacity and efficiency of the organisms and help to achieving growth in MSMF sector. So it's focused on the dedicated cadre technical officers. So देखिए, according to report published by Forbes in Forbes magazine, India has surpassed its colonial masters United Kingdom to become world's sixth largest economy in GDP terms for first time after nearly 150 years. Following the changes, the ranking India's economy now stands behind the United States, China, Japan, Germany, and France. Key facts: India has managed to overtake UK, owing to Britain's recent Brexit-related problems and its rapid economic growth, followed by downslide in the value of the pound. UK's economy is expected to grow 1.8% in 2016, slow down to 1.1% in 2017. Its economy and currency and struggling since it voted to leave lucrative common market of European Union. Her Indian economy maintained its growth around 7%. So primarily due to price slump in global commodities, good rainfall, lower than expected inflation, reforms undertaken by government spur growth. Furthermore, this gap is expected to widen as India's growth 6 to 8% per annum as compared to UK's 1 to 2% until 2020, even and likely beyond, even if the currencies fluctuate that modify these growth figures to wrap equally. India's economy will be ahead of UK based and on future growth prospects. Scientists have first time discovered the so-called molten jade stream within the Earth's molten iron core में देखा. Jade stream. Scientists ने discover किया है molten jade stream को देखा. Last data obtained from three European satellites called Swarm. Swarm ये कैच हो गया है. The three satellites were launched in 2013 में लॉन्च किया था. गोल स्टार्टिंग अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. क्या इसका गोल था, क्या ना स्टार्टिंग अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम जानना पड़ेगा. The latest satellite data that helps create surfaced X-ray view of the planet. एक्सरे जो व्यू करते हैं प्लैनेट को, एक्सरे जो प्लैनेट एक्सरे को भी व्यू करते हैं प्लैनेट में. की फैक्ट्स क्या है, द मोल्टन जेट स्ट्रीम इज एक्सेलरेटिंग बैंड ऑफ मोल्टन आयरन सर्कलिंग. सो मोल्टन जेट स्ट्रीम है एक्सेलरेटिंग क्या करता है, बैंड ऑफ मोल्टन आयरन को इन द नॉर्थ पोल. इट जस्ट लाइक द जेट स्ट्रीम in the atmosphere. It moves around 40 km per year currently in a westward direction. This speed is 3 times faster than the normal outer core speed. 100,000 faster than the rate at each Earth's tectonic plates move. It is located along a boundary between two different regions in the core. This movement is caused when liquid and in core flows towards the boundary from both sides. So significance क्या है? The satellite data help to clarify inner working and the magnetic field. It
so that changes the magnetic field actually being caused by molten jet stream. The discovery can also be add light in changing magnetic field and the field of the earth and related and it switch in direction of the jet stream. Researchers of United States developed first vaccine of for chikungunya fever. Okay, made from an insect specific elite virus. The newly developed vaccine does not have any effect on people. Okay, तो उन्होंने लॉन्च किया है क्या ना चिकनगुनिया फीवर के लिए स्टॉप करने के लिए फर्स्ट वैक्सीन इंटर इंसेक्ट स्पेसिफिक इलेक्ट वायरस. ओके ओके इसका काम देखिए. इट्स क्लिनिकल ट्रायल्स ऑन मिक एंड नॉन ह्यूमन primates show that it quickly produces a strong immune defense and completely protects them if disease and exposed to the chikungunya virus. Okay, key facts क्या है? Researchers had used live attendant attenuated elite virus clone to design for this hybrid virus based vaccine containing chikungunya structural proteins. Okay. The elite and chikungunya vaccine was found to be structurally identical to natural chikungunya virus. Its single dose can produce neutralizing antibodies that lasted for more than 290 days. The antibodies provided complete protection against chikungunya in two different mouse models. In non-human primates, the vaccine elected rapid and robust immunity. The vaccine trials also showed that there was neither evidence of virus in the blood nor signs of illness such as fever after chikungunya virus infection in primates. About chikungunya, okay, chikungunya is a mosquito-borne virus that causes diseases. It is transmitted by Aedes aegypti, Aedes albopictus mosquitoes. Its symptoms are characterized by abrupt fever, anti-severe joint pain, often hearts and feet, and many included headache, muscle pain, and joint swelling or rash. There is no specific antiviral drug treatment. Okay, there is no commercial chikungunya vaccine. So chikungunya treatment predicted primarily relieving symptoms including joint pain using antiphytics, optimal analgesics, fluids. Again, India ranked fourth in the global wind power installed capacity index with cumulative installed wind power generation capacity of 25,088 in 2015. Okay, the index was released as part Global Wind Report annual market flagship publication Global Wind Power Council. Okay, so Global Wind Energy Council. The key facts here: the index was topped by China. Okay, followed by US and Germany with cumulative installed with wind power generation. Okay, 1,45,000. Okay, 362. Okay. And 74 and 44,000. Okay, so so देखिए कितना हाई है उन लोगों का. Both Europe and US market perform better than expected, and better the European sectors set new records, installing just over 3 gigawatt. Canada, Mexico, Brazil all had strong years. South Africa was the first market in Africa to pass 1,000 gigawatt 2015 alongside Egypt, Moscow, Ethiopia also leading development of the market. Brazil countries to lead Latin America, followed by Chile, Norway, and potentially a very large market. Again,
India has achieved the largest ever wind power capacity addition of 3,423 megawatt in 2016, expected to target 44%. Okay. सो हमने इसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो हम डिस्कस करेंगे. ओके. सो हम अब सुनते रहिए मेरा मेरा बात. ओके. देखिए सिक्योरिटी के अंदर जो सेंट्रल फोर्स रास्ट टू मणिपुर, द सेंटर हैज रास्ट अराउंड 4,000 paramilitary personnel to Manipur. Okay, it in the wake of violence. Okay, following the economic blockade of the North National Highway connecting the state. Okay, देखिए 4,000 पैरामिलिट्री जो पर्सनल जो इन मणिपुर में उन्होंने क्या किया ना, वायलेंस फॉलोइंग द इकोनॉमिक ब्लॉकेड ऑफ द नेशनल हाईवे कनेक्टिंग द स्टेट. ओके. तो वहाँ पर उन्होंने काम किया, 4,000 पैरामिलिट्री जो वहाँ पर काम कर रहे हैं. ओके. मणिपुर में द डिसीजन वाज टेकन इन द वेक ऑफ द वायलेंस फॉलोइंग द इकोनॉमिक ब्लॉकेड imposed by the United Naga Council since November 1 on to National Highway NH2 Imphal Dimapur and National NH 37 Imphal Jiribam that serve as lifelines for the landlocked Manipur. Okay. जो NH 37 में हो रहा है वायलेंस. ओके. ओके. इकोनॉमिक ब्लॉकेड के लेकर. ओके. नागा कम्युनिटी जो है. ओके. सो NH2 and NH 37 Imphal and Jirbham. Okay, that serve as lifeline for the landlocked Manipur. Okay, Nagaland Chief Minister T.R. Jeliang has sought the intervention of the central and the Manipur government in securing their lives and property of Nagas in the Imphal Valley, Manipur. Many innocent Naga travelers जो है वो the Manipur had been assaulted its elite. Okay. Okay. तो उसके बाद हमने देखेंगे क्या ना जो मणिपुर. Okay. मणिपुर के बाद CBSE culture. CBSE removes relations of on Nadars from textbook. Okay. Nadar. Okay. The Central Board of Secondary Education CBSE has directed that the topic in the class 9 social science textbook on caste conflict and race change जो हो रहा है, which refers to the Nadar community be dropped from the curriculum. Nadar community जो curriculum में drop कर रहे हैं. Again जो इसी कास्ट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है एंड ड्रेस चेंज हो रहा है इसके बारे में. द टॉपिक फीचर्स इन इंडिया एंड द कंटेम्परेरी वर्ल्ड वन. ओके. वन ऑफ द सोशल साइंस टेक्स्ट बुक पब्लिश्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च NCERT में भी वो पब्लिश हो रहा है. ओके. तो एंड यूज इन CBSE स्कूल अक्रॉस द कंट्री. इसको हमने जो CBSE बोर्ड है उसको में हमने यूज करेंगे. ओके. इन द चैप्टर द टाइटल क्लॉथिंग is social theory history. The another community is referred to under the caste conflict. The dress change हो रहा है. Subhead wherein it is stated that the majority of them were considered a subordinate caste and that they were expected to follow the local custom of not covering their upper bodies. Okay. जो क्या है ना इसके बाद क्या करना, जो कास्ट कॉन्फ्लिक्ट है जो ड्रेस चेंज हो रहा है वो हम देखेंगे क्या वो कहाँ पर हो रहा है. स्टेट के अंदर जो कहाँ पर मेजोरिटी है सबऑर्डिनेट जो कास्ट है वहाँ पर मेजोरिटी है ना कहाँ पर है. तो देयर आर एक्सपेक्टेड द फॉलो लोकल कस्टम जो है नॉट कवरिंग अपर बॉडीज. जो अपर लोकल कस्टम में है ना अपर बॉडीज में वो नहीं हो रहा है तो उसको हम देखेंगे. ओके. सो उसका बात क्या है ना द डिफरेंस ऑफ द नदर कम्युनिटी इन द टेक्स्ट बुक अंदर तो हमने ढुका दिया अंदर कर दिया. तो उसके बाद जो हैड ट्रिगर्ड जो मेजर ज्वाइन कर दिया उसको एंड टेक्स्ट बुक हैड ट्रिगर्ड किया ना ये मेजर कंट्रोवर्सी इन 2012 में कंट्रोवर्सी एंड अट्रैक्टेड स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज. जो स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन का हो रहा है पॉलिटिकल पार्टीज से.
ओके, नदर क्या है, नदर देखिए, नदर इट इज अ तमिल कास्ट ऑन साउथ इंडिया एंड श्रीलंका। ओके, historically most Nadars were cultivators of palmyra trees and jaggery, and a few were also involved in the toddy trade. Okay, another claimers had faced क्या faced किया था ना, discrimination from major upper caste, okay, in some regions में, और उनका डिस्क्रिमिनेशन कर दिया गया। ओके, ए मटेरियल आर्ट, ओके, देखिए, ए मटेरियल आर्ट दैट हैज बीन कॉल्ड साउथर्न स्टाइल, ओके, कलारी पेत्तू since around 1958 has historically practiced by the Nadars. Okay, Nadars are classified as and listed on as the other backward class, okay, by government of Tamil Nadu. Okay, देखिए, इसके बाद इंडिया एंड किर्गिस्तान का जो 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 ग्लोबल पैक्ट है एगेंस्ट टेरर को, उसके बाद हम देखेंगे SC में हियर प्ले ऑन टैक्स रिलीफ फॉर पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, रेलवे पैसेंजर्स शुड पे द सर्विसेज। ओके, उसके बाद देखिए क्रेडिट कॉस्ट cost pose a hurdle to the dream of the lost cash economy. Okay, देखिए, पहले हमने क्या डिस्कस करूँगा, देखिए पहले हमने डिस्कस करेंगे क्या, इंडिया किर्गिस्तान सीक्स ए ग्लोबल पैक्ट अगेंस्ट टेरर। ओके, इंडियन किर्गिस्तान फैसिलिटेड के प्लान्स टू जॉइन मिलिट्री एक्सरसाइज किया। ओके, खंजर फॉर इन फरवरी 2000 मार्च 2017 में करेंगे, एंड रिटायर्ड द नीड फॉर ग्लोबल कन्वेंशन अगेंस्ट टेररिज्म के बारे में। द खंजर टू एक्सरसाइज वर हेल्ड इन मार्च 2015 इन किर्गिस्तान, एंड खंजर 3 इन मार्च अप्रैल 2016 ग्वालियर। visiting President Almaz Beg Atma highlighted the common historical heritage and sought cooperation and to deal with the current global challenges like terrorism. Kyrgyzstan is home of the great Mughals of India. किर्गिस्तान जो ग्रेट मुगल्स जो है वहाँ से आए थे मुगल्स, और एंड एम्परर बाबर जो वहाँ से आए थे, वर कम फ्रॉम द सिटी ओस, एंड इवन in his memoir Babur Nama. Okay, he refers to his place of origin in the mountains of near Oz का जो mountain है near, वहाँ से वो बाबर नामा जो है वहाँ पर है। तो M.R. Atmavedev said, referring to the shared heritage and values of the country and India and laying out a common plan to deal with emerging and contemporary challenges. The visiting president also took note of the IT support that India had provided to the Kyrgyzstan military institution, including building 3 IT centers in the past 2 years. It also noted the high altitude Kyrgyzstan India mountain trading center being built in the city of Balikchi. Okay, center city of Balikchi, which will be used to train Indian military personally. So Indian military train Indian military personnel. In the visiting delegation also welcome India's proposal for training Kyrgyzstan forces. Okay, Kyrgyzstan forces को training करेंगे forces for United Nations peacekeeping assignments में. In the first with the Central Asian region, we had initiated telemedicine links with Kyrgyzstan Republic. Kyrgyzstan Republic in 2015 में initiated telecommunication links में हम आ गया है. Both sides retired with the demand of the global center counter terror norms. Okay, the fight terrorism, हमने terrorism के बारे में fight करेंगे terrorism के साथ, and called the adoption of the United Nations of the draft comprehensive convention of combating international terrorism के stop खत्म करने के लिए.
Mr. Atmadev appreciated India's support to building the transport network in Iran and Afghanistan. Okay, तो appreciated the India's support क्या कर रहा है जो building और transport network ईरान और अफगानिस्तान में, and said this will increase regional connectivity, जो increase करेंगे regional connectivity को, and help connect Kyrgyzstan, Iran, Afghanistan and beyond में. The Mr. Atmaev, who completed a 4-day visit to India, also sealed agreements on foreign office consultation, sports, broadcast, cooperation and build investment. देखिए इसका तो पॉलिटी क्या है, जुडिशियरी पॉलिटी, इसी में हियर प्ले ऑन टैक्स रिलीफ फॉर पॉलिटिकल पार्टीज. ओके, देखिए सुप्रीम कोर्ट इज लाइकली टू हियर ए राइट pretension to declare as unconstitutional certain provision of the Income Tax Act. Okay, सुप्रीम कोर्ट ने क्या ना पिटिशन किया है, डिक्लेयर कर दिया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो सर्टेन प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स के बारे में बताया, एक्ट के बारे में बताया, एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट गिविंग 100% टैक्स एक्सेम्पशन, 100% टैक्स देना पड़ेगा political parties. The petition filed by Advocate M.L. Sharma has challenged the constitutionally of section 13A, जो 13A में section के of the Income Tax Act में of 1991 में, and section 29. Okay, में representative of the People Act 1951 में जो हुआ है. The petition has asked किया कि why ordinary person are taxed while the political parties enjoy tax exemption. Political party जो enjoy कर रहा है tax exemption को, political parties registered with the election commission are 100% exempted from paying income tax. Okay, जो इनकम टैक्स को पे करेंगे एंड फाइल इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट when we are along with audited accounts, income expenditure details and balance sheet, the petition said. Okay, Mr. Sharma said the petition necessitated by the Finance Secretary in December 2016 declared that no investigation would be done against the political parties. Okay, accounts and funding upon depositing on all demonetized not winning of the 100% tax exemption. Railway passengers should pay for services. देखिए रेलवे मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली said rail passengers need to pay for services, outlining a vision for the Indian Railway 2 months before he said a present the union budget that will merge the rail budget. Okay, for the first time in Indian history, Center will resist populist measures focus on improving the railway station infrastructure, monetize railway assets and commercial activities, outsource train hospitality, and most importantly, make consumers pay the services. The first essential principle of running any establishment, particularly a commercial establishment, is that the consumer must pay for the services that they receive. The power sector companies जो है run into debate as consumers were not paying for services in 1990s. तो पावर सेक्टर है जो कंपनीज है जो रन इनटू डिबेट एज कंज्यूमर्स वेयर नॉट पेइंग फॉर सर्विसेज, जो नहीं पे करते हैं सर्विस को. 1990 सेक्टर रिफॉर्म्स में कम इन 2033 में वो आए थे. ओके, द हाईवे सेक्टर वाज बिकम बूमिंग. ओके, बिकॉज कंज्यूमर्स पेड थ्रू टोल टैक्स, कंज्यूमर जो पेड करते हैं टोल टैक्स को और सेल्स ऑन फ्यूल को. ओके, At present, the Indian Railway recorded 57% of the travel cost record करते हैं travel cost of passenger tickets. This means if it spend reaches 100 on the train journey, it recorded 57 from the passengers, and the rest went as subsidy. Okay. Even though the Indian Railway had monopoly over the rail network of the country, it faced competition
upon alternative modes such as air and road. The core competition of the railway is to drive trains, and hospitality may not be its core competence. Therefore, the principal outstanding outsourcing. Okay. देखिए डिजिटल इकोनॉमी क्रेडिट कॉस्ट पोज ए हर्डल टू द ड्रीम ऑफ ए लेस कैश इकोनॉमी. ओके. ओके. देखिए ऑन नवंबर 18 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूड क्या है ना ए सर्कुलर क्या है ना आस्किंग बैंक्स टू वेब ऑफ till December 30, 2016 charges levied on transactions by merchant establishment using point of sale terminals. Customers charges in this case are known as the merchant discount rate in banking parlance. Okay, to promote greater use of debit cards, public sector banks and some of the private sector banks decided to waive the MDR changes until 31/12/2016. The move, however, benefited the merchants only no, no, only okay. देखिए only क्या करेंगे ना the charge of the is borne the merchant and goes to the issue bank, the bank okay the bank has issued the card, the acquired bank, the bank that installed the POS terminal and payment gateway such as Mastercard, Visa and Rupee. The issuer bank gets the maximum share of the MDR. The government has asked the banks to beef up installations of POS terminals. Okay. In case debit cards swept, okay, debit cards are issued to customers, okay, who have a saving bank account. Okay, when depositor keeps the funds it is saving accounts. Okay. Which can earn at least 6.5%. Okay. ओके. ये है आज का आर्टिकल. द कॉमर्स एंड the committee had recommended that the setting of MDR should be market driven. However, interchange fees may be regulated to an event based approach. Okay. The percent of all 20% of all transactions. The version of the committee presents a roadmap for digital payments. Okay. 20% of all transactions over the next 3 years. Okay. The country's cash to GDP ratio, which is among the highest in the world, okay, was envisioned to be reduced from about 12% up to 6%. Okay. So आपको मैंने समझ दिया कि आप कैसे आपको इसको पढ़ेंगे. तो ये है आज का जो आर्टिकल है. तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड हियरिंग मी. तो आई थिंक इट विल बी हेल्प टू यू फॉर योर सक्सेस. तो थैंक्स टू यू.